Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi Khurana. Let's take a look at what made news this week. Ishkaman Valley and other regions of Gilgit-Baltistan rattled with protests. Cleanliness drive at the picturesque Dal Lake in Srinagar turns into an employment opportunity for the locals. A youth conference organized in Kashmir University, a platform for the Kashmiri youth to learn basics of international diplomacy. Government pays tribute to the generations of Kashmiri artists on the occasion of Teachers' Day. And in our special section of Incredible India, we take you to witness the magnificent celebrations of Krishna Janmashtami all across India. The illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan is rattled with protest against the Pakistan-backed local government in the region. The residents of Ishkaman Valley in the northern district of Gezer took to the streets against the local administration for the non-compliance to their demands. The residents, perturbed with inflation, shortage of food and lack of infrastructure development in the region, blamed the local government for corruption and the negligence towards growth of Ishkaman Valley. We have a report. The illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan is rattled with protests against the local authorities. For more than 70 years of Pakistan's misrule in the territory, the residents have endured innumerable hardships and deprivation. Ishkaman Valley, an enduring marvel of nature, has been left underdeveloped for decades. With no electricity, no medical healthcare facilities and food, the residents are clamoring for the very basic needs for their survival. The apathetic attitude of the local administration in Gilgit-Baltistan has caused the residents to take to the streets against the inefficient government. हम अगर अपनी हक की बात करते हैं तो अगर कोई कहता है कि मैं अपने जबर के बलबूते पे, अपनी ताकत के बलबूते पे इसको डराऊंगा, ये 1947 नहीं, ये 2023 है। आज हम अगर यहां गरीब की बात करते हैं, यहां मजलूम की बात करते हैं, यहां तरक्याती कामों में करप्शन की बात करते हैं, तो इसके ऊपर अगर कोई हमला करा के यह साबित करना चाहता और यह समझता है कि हमारे हमले से इनके सारे हौसले नीचे आएंगे, तो यह उनकी भूल है कि हम आज के बाद मजीद मजबूत होंगे और मजीद इस मजलूम कौम की नुमाइंदगी करेंगे। The residents in Ishkaman have often been used as pawns to bring corrupt administration to power year after year. Although the Ishkaman Valley in the northern Gezer district of Gilgit-Baltistan is an important location, the local administration has not given it a status of even a subdivision. Residents complain the corrupt administration has taken advantage of their decency and used them to canvass for their leaders who lick the boots of dictators from Islamabad. यहां पर तमाम सेक्रेटरीज जिनको हमने एप्लीकेशंस दे दे के थक गए, अब ये हमारा शराफत का जो है गलत फायदा नहीं उठाया जाए। हम यहीं पे रहेंगे, हम धरने पे आएंगे, हम अपने लोगों को यहां पे खड़े करेंगे। हमें पता है कि हमने जब 18,000 लोगों को चिनार के नीचे जमा किया था, अब की बार 28,000 से ज्यादा तादाद यहां पे आएगी। The residents, saturated with the stooge administration's coercive actions and atrocities on the general public, have now resolved to protest until their demands are met. The residents demand that the Ishkaman Valley should get the status of a subdivision and development works like metal road and bridges
should be built on priority. However, there are several other basic demands of the locals that have gone unnoticed and unfulfilled by the local administration of Gilgit-Baltistan. हम टाइम देंगे, उस टाइम के दौरान अगर हिम्मत अगर ये हो तो बेहतर है। फिर हुकूमत वाले ये न कहे कि इस कॉमन में फंसे हुए लोग कहां जाएंगे, हम पीछे जाएंगे उस तरफ। इनको समझ आनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हर कोने के लोगों को उसको जो है ना घेर कर हम उनको कैदी बनाएंगे तो इनका बाप भी नहीं बना सकता है। ये याद रखें ये लोग। The protests are erupting all across the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan. There are innumerable problems that the residents are facing: the heightened inflation, load shedding, unavailability of food, and on top, the sectarian violence against the Shia majority in Gilgit-Baltistan have further disgruntled the residents. Moving on, the Dal Lake at the heart of Srinagar has remained an epitome of Kashmiri civilization for times immemorial. To keep the waters of this urban Himalayan lake pure and pollution-free, the Jammu and Kashmir Lakes Conservation and Management Authority has started a cleanliness drive that would not only add to the beauty of Kashmir, but also serve as an employment opportunity for a number of locals residing near the Dal Lake. We have a report. Dal Lake, the jewel in the crown of Kashmir. With the long shoreline of around 15 kilometers, Dal Lake is the second largest lake in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The urban lake, lined up with Kashmir's quintessential houseboats, shikaras, is a scenic marvel that tourists from the country and abroad do not afford to miss out. To maintain this marvelous beauty of Kashmir Valley, around 450 people have been employed, who religiously keep the lake free of weeds and urban pollution. यूजुअली जो पेरिफेरी है डल की शोर लाइन उसको हम बोलते हैं, उसको हमने मैन्युअली लेबर्स वहाँ पे लगाए हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एवरेज में 450 लेबर्स जो शोर लाइन क्लीन करते हैं, उसकी वजह से लेक क्लीन रहता है। तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। जो यहाँ के लोकल्स है डल के सराउंडिंग में रहते हैं तो उनको रोजगार भी मिलता है। तो वो सारा सिलसिला चलता रहता है। ईयरली हम करते हैं ये कंटिन्यूसली। The Jammu and Kashmir Lakes Conservation and Management Authority has been dutifully maintaining the biodiversity of the natural lake for several years. They have employed a number of people residing near Dal Lake to keep the water body clean and pure. Although the lake has remained as pious as it was in its yesteryears, with the utmost devotion showed by the workers, the harsh winters and mercurial temperatures in summer have taken a toll on few lives on the line of duty. यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी में काम करना पड़ता है। लेबर जो होते हैं वो पूरा दिन यहाँ पे खड़े रह के डल की सफाई करते हैं। इस बीच बहुत सारे लेबर्स ऐसे थे जिनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसकी वजह से कुछ एक लेबर्स की डेथ भी हुई। इस साल गवर्नमेंट ने वो मद्देनजर रखते हुए कुछ लेबर्स का बल्कि सभी लेबर जो भी अभी इसमें इन्वॉल्व है उन सबों का इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें ऐड की है।
और साथ में इसका पीएफ भी ऐड किया हुआ है। उसके लिए हम गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे ना तो डल ये खराब हो जाएगा, टूरिज्म भी नहीं आएगा। अगर कुछ चलता है वो इसी डल की वजह से चलता है। वो अगर कोई बाहर से आता है वो पहले डल ही देखने आता है, बिकॉज इट इज़ अ क्राउन ऑफ दिस कश्मीर। डल लेक इज़ अ crown of the Kashmir. The government authority taking cognizance of the matter has now enrolled all the employees under the purview of insurance, provident fund and other facilities to benefit the local workers. The new beneficial policies brought in by the government is further attracting many youngsters residing near Dal Lake to take up the task of cleaning the lake. इनके लिए हमने एक तो इंश्योरेंस रखा है, जो भी इसमें ये डिवीडिंग लेबर्स है उनको इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड रखा है। यूजुअली होता क्या था, प्रीवियसली ऐसे नहीं होता था, इस साल से हमने ये अडॉप्ट किया है। एक तो इनका इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड, किसी की डेथ होती थी ड्यूरिंग डिवीडिंग तो वो बेनिफिट उसको नहीं मिलते थे। अब इन केस अगर किसी की डेथ होती है उसको इंश्योरेंस मिलेगा एज वेल एज प्रोविडेंट फंड भी है उसका। The Himalayan urban lake located in the heart of Srinagar has maintained its charm for generations. Serving as one of the main tourist attractions of the valley, Dal Lake and its spellbinding character is being religiously looked after by an army of workers who relentlessly perform their duties day after day. They give out an assurance that the jewel in the crown of Kashmir is in the safe hands. The enthusiastic youth in the Union Territory of Jammu and Kashmir is witnessing a host of personality and skill development programs coming their way. An NGO, India's international movement to unite nations, organized a 3-day youth conference at the Kashmir University of Srinagar to provide a platform to build leadership skills and learn about international diplomacy and functioning of the diplomats at United Nations and other international forums and arenas. Take a look. The youth is considered a powerhouse for any country. In line with this thought, a youth conference was organized in Kashmir University of Srinagar. The 3-day event saw participation of more than 500 students who represented different countries, national level institutes and other associated parties as delegates. Organized by the India's international movement to unite nations, the event had a large gamut of activities such as debates, talent hunt and several other personality development sessions for the youngsters. आगे जाके यूथ ही हमारे कंट्री का फ्यूचर है, तो उनको आज से ही हम सिखाया कि कल को जो आपको जो चीज़ करनी है उसके लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं आज ही से, और इंडियननेस प्रमोट करने की। दैट इज़ द मेन थिंग कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि आप अपने रूट से कनेक्टेड रहिए एंड आप कैसे आगे जाके वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। तो ऐसे इवेंट से क्या बेनिफिट्स होता है? ऐसे बच्चों को एटमॉस्फेयर बहुत मिलता है एंड डिबेट करने का जो पोटेंशियल है उनको पता चलता है कि हाउ दे कैन डिबेट, क्योंकि डिबेट खाली ये नहीं होता है तूने ये किया आपने ये किया, दैट इज़ नॉट अ डिबेट। डिबेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है एंड उनको एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ यूएन फंक्शंस, हाउ पार्लियामेंट फंक्शंस। देखिए हम यूएन में तो जा नहीं सकते डायरेक्टली, बट वी कैन रेप्लिकेट इट। दैट इज़ द मेन थिंग कि बच्चों को हम एक चीज़ सिखाए कि हाउ टू डिबेट एंड हाउ टू लर्न। वी teach kids how diplomacy works and we teach them what is diplomacy. The non-profit organization is considered by the governments around the world and the United Nations as the world's largest youth-run platform. It trains students between 15 to 19 years in different aspects of diplomacy,
and gives them an overview of how the governments and their diplomats function on the world stage. The organization holds the event in 7,500 plus schools in 220 cities and towns in India and 35 countries, impacting over 10 million students. A renowned television actor, Ravi Dubey, was also present at the event. He wished the younger generation of Kashmir to prosper and become leaders in the field of international diplomacy and administration. Youth from all over the country to unite, and they encourage conversations and sharing of thoughts and experiences. So I also from time to time volunteer for them. And Rishabh, the founder of the organization, is a close friend of mine. So here I am. Is it useful for you? How is it useful for you? Useful? I don't think useful is the right word. I think it, if the worldview of youth changes, then it is more transformative than only useful. So yeah. So for me, you volunteer for things not from the sense of them being useful to you. You volunteer for things as from a more altruistic point of view. For the young students of Kashmir, it was an opportunity to showcase their oratory and debating skills that are required for the diplomats representing their countries at world stage. The event had a huge participation of young students in the Union Territory, who were greatly enthusiastic about learning the new skills and become flag bearers of India on the international arena. Moving on, commemorating the occasion of Teachers' Day, the government in the Union Territory of Jammu and Kashmir took a unique initiative to highlight the role of the artists involved in arts, crafts and handloom manufacturing in Kashmir. An event titled Celebrate Your Craftsmen was organized at the Conference Hall of Kashmir Heart in Srinagar to pay respect and tributes to the generation of artisans who have kept the art in Kashmiri handlooms and crafts alive till today. Let's take a look. The handloom and crafts made by the dexterous artisans of Kashmir are widely popular not only in India but all across the world. The Pashmina shawls and other products of Kashmir are such rare pieces of art that textile connoisseurs and businessmen travel across the seas to establish business ties with the Indian subcontinent. It is a result of generations of Kashmiri artists who have kept the craftsmanship and the traditional art form alive since time immemorial. To celebrate these artists and their skills, the government and Union Territory of Jammu and Kashmir organized an event titled Celebrate Your Craftsmen at the Kashmir Heart in Srinagar. हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है वो हमको बहुत सपोर्ट करती है, इसी वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जब हैंडीक्राफ्ट आगे बढ़ता है तो हम उनके साथ रहते हैं, वो हमको मदद करते हैं, हर कुछ फील्ड में हमको मदद करते हैं, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। और इस डे को हम बहुत खुश मानेंगे। ये दिन जो है ये पहली बार हुआ है इधर जे&के में। पिछले कई दहाइयों से मतलब ये आर्टिजन को तबका जो है मैं समझता हूँ बहुत ही इफेक्ट हो गया है। अब कई सालों से इसको एक नया वो तरह आ गया है, जिससे इसको लग रहा है एक आर्टिजन को कि मेरे पीछे भी कोई है, कि मैं इसका मतलब क्रेडिट लेने के लिए आर्टिजन भाइयों को भी, ये बहनों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में इस करंट फील्ड के हिसाब से जो मार्केट हमें मांगता है उस हिसाब से आप मतलब अपने इस आर्ट को आगे बढ़ाइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपना देश का नाम रोशन कीजिए। The hard work and the determination the generations of Kashmiri artisans have shown in keeping their traditional art form alive is commendable.
demand of Kashmiri handmade products has increased many folds in the national and international markets. The government too is providing impetus to the handloom industry and supporting Kashmiri artisans with several beneficial schemes launched for them in the last few years. हम यहाँ आज टीचर्स डे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5 सितंबर है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जितने भी हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिसंस हैं, वो एक्चुअली टीचर्स हैं, क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ये आप इसका कोई स्कूल नहीं है जिसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसमें आप जाके सीख सकते हैं। ये आप अगली पीढ़ी को ये क्राफ्ट्समैन आप ही सिखाते हैं और उस वे में ये सब टीचर्स हैं, और अगर ये टीचर्स ना रहें तो ये क्राफ्ट यहीं ख़त्म हो जाए, अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए। तो हम इनको आज ऑनर करके, स्पेशली जो हमारी सरकार की डिपार्टमेंट की जो स्कीम है, जैसे कारखंदा स्कीम है या जो हम कोऑपरेटिव बनाते हैं, उसका मकसद यही है कि हम इसमें नेक्स्ट जनरेशन तक ये क्राफ्ट को प्रमोट करें और क्राफ्ट के एक्सीलेंस को प्रमोट करें। तो वो उसमें ये सब जितने भी हमारे आर्टिसंस हैं कश्मीर के, JNK के, ये सब टीचर्स हैं और हम इनको आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए। This year's Teachers' Day in Jammu and Kashmir was dedicated to the skilled artisans who have been passing on the unique traditional handloom skills to the next generation for last several decades. With the efforts of the government and this community of artisans, Kashmir is witnessing a new dawn in the sector of handloom and handicrafts industry. And now let's embark on a colourful adventure of Janmashtami, the day recognized as Lord Shri Krishna's birthday throughout the nation. Lord Shri Krishna is the 8th incarnation of Lord Vishnu. Let's walk you through the significance of the festival and how the celebrations of Krishna's birthday took place in different parts of the country. Vasudev Shri Krishna is the supreme personality of Godhead who embodies all divine qualities and possesses infinite benevolence for his devotees. Shri Krishna is known for his charming personality and the divinity he ensues in his every disciple. Janmashtami is the birthday of the most beloved god, Shri Krishna. Among Hindus, it is the occasion for the magnificent celebrations. The followers of Lord Shri Krishna observe fast and honor the Lord by organizing bhajan kirtans on this day. The celebrations run for the whole day and the night. जन्माष्टमी जैसे हम लोगों का तो बहुत ही बड़ा मतलब ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि ही है। ये भारत हमारी राम जी की श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो जन्माष्टमी यहाँ पर बहुत धूमधाम से पाला जाता है। हम सुबह से व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म जो है कि रात के 12 बजे के बाद होता है, उसके बाद घर में जैसे पूजा पाठ करके व्रत तोड़ते हैं। और यहाँ पर जैसे हमारे राम मंदिर में, इस्कन मंदिर में जो भी सब आते हैं दर्शन करके जाते हैं। और बाल गोपाल जी को पूरा हम सजा के, घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी राधा और कृष्ण की तरह सजा के एक कृष्ण का जन्मदिन पालन होता है। At midnight, which is known as the traditional hour of his birth, the devotees take turns to swing the beautifully decorated cradle of their beloved Lord Shri Krishna and seek his blessings. The whole atmosphere gets filled with prayers and chants of Hathi Ghoda Pal Ki, Jai Kanhaiya Lal Ki to hail the birth of the Supreme Lord. Shri Krishna Janmashtami is also named Shri Jayanti, Gokila Ashtami or Shri Krishna Jayanti in different parts of the country. बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे है। जन्माष्टमी त्यौहार बहुत अच्छा है। यहाँ पे होली, पिछली बार में होली में आए थे, अब की जो है जन्माष्टमी देखने के लिए सब कृष्ण जी और राधा मैया की जो है मेहरबानी, उनका सौभाग्य है जो दर्शन उनके हुए आज। During the festival,
The temples are decorated with lights and flowers to welcome the Lord of Love. The childhood idol of Sri Krishna is embellished with brand new shining attire, a jewel-studded crown and other decorations. For the devotees, it is a scene to behold for their lifetimes. Sweets are given to the devotees in the form of blessings and sacraments after being offered to the Supreme Lord. ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके जन्मदिन पे उनके जन्म स्थल पर है और इतना सुंदर माहौल है, इतना सब अच्छा है, उत्साह और उत्सव का माहौल बना हुआ है भक्तों में भी और यहाँ के सब लोगों में भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ. During this festival, another event is Dahi Handi, which depicts the childhood days of Lord Krishna when he would notoriously build a human pyramid to reach the pot filled with milk butter, his favorite delicacy. During Dahi Handi, a group of young boys make a human pyramid to get to the butter pot hung at a certain height, and the youngest member among them would break the delicious butter pot. It is a kind of sport in several towns, cities and hamlets in India, where a lot of teams enroll themselves to participate in Dahi Handi. The winners get the prize money or trophies for their performances. The life story of Lord Sri Krishna is an inspiration for millions of people around the world and offers a comprehensive system of spiritual knowledge and self-realization. Well, that's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.